minus 40 seconds. L110 VHPP open. Minus And 30 seconds to go. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff, 640 tons of powerhouse searing through the sky. A magnificent sight indeed. जी हाँ, सफलतापूर्ण उत्थापन LVM3 प्रमोचन यान का आकाश में गर्जना करता हुआ यह सबसे भारी रॉकेट है इसरो का। फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। Here from the mission control center we can feel the vibrations of the launch. दोनों S200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर। Generating a peak thrust of 5,952 kilonewtons in vacuum with two S200 motors thrusting Just 1 currently. minute. S200 मोटर जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका एक मोटर का प्रणोदक करीब 200 टन का होता है। इस दौरान यह कुल 12,000 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर इस यान को लिफ्ट ऑफ प्रदान करता है और यह करीब 136 सेकंड्स तक चलकर यान से पृथक कर दिया जाएगा। The trajectory during the atmospheric regime is to have least angle of attack with respect to wind so that the launch vehicle structures experience lesser loads. The S200s are 26 meters long and 3.2 meters in diameter, carrying 202.6 tons of propellant. अब कोर चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The core L110 and the two S200 boosters all thrusting currently. अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे S200 का पृथक्करण। 200 stages are separated. जी हाँ, S200 बूस्टर्स को सेपरेट कर दिया गया है तथा L110 या चरण प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। On your TV screens, the visuals from the onboard camera showing the separation event of the S200 boosters. The L110 core stage alone currently thrusting. S200 बूस्टर्स को जेटिसनिंग मोटर का प्रयोग कर बड़ी सावधानी से यान से अलग कर दिया जाता है। L110 जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, वर्तमान में प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Slope guidance initiated. Shar, Bangalore and Trivandrum ground stations are currently tracking and the two major flight events have been completed. The separation of payload fairing and the initiation of closed loop guidance. यान की ऊंचाई 142 किलोमीटर। अब यह वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। यान पूरी तरह सामान्य निष्पादन करता हुआ अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है, यानी सेंसर्स की मदद से वह स्वयं का दिशा निर्धारण कर रहा है। Current altitude 163 kilometers. Plus 4 minutes. The L110 stage is powered by twin Vikas engines. The total burn time is close to 200 seconds.
यान पूर्णतः अपेक्षित पथ को अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Cryo stage is authorized. कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे L110 चरण का प्रज्वलन Just 1 समाप्त हो minute. जाएगा और तत्पश्चात L110 को यान से पृथक कर दिया जाएगा। 110 stage thrust cut off and separated. C25 ignition commanded. C25 ignition confirmed. Several pieces of good news for the flight events. L110 has completed its operation nominally and separated from the ongoing launch vehicle. The C25 cryogenic engine has started its operation. L110 चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है और अंतिम चरण जो कि C25 क्रायोजेनिक इंजन है उसका सफलतापूर्वक प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में वह प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्देश्य कक्षा की ओर ले जा रहा है। Plus 6 minutes. इसका प्रज्वलन काल करीब 640 सेकंड का होगा। तत्पश्चात कक्षा की स्थितियां प्राप्त कर ली जाएंगी और अंतःक्षेपण किया जाएगा। 28.55 tons of propellant loading of liquid hydrogen and liquid oxygen. तृतीय तथा अंतिम चरण LVM3 का क्रायोजेनिक ईंधन LH2 तथा लिक्विड ऑक्सीजन पर आधारित है। यह चरण बहुत ही जटिल C20 इंजन से बना होता है। इसमें लगभग 25 टन का क्रायोजेनिक ईंधन होता है। इस चरण का प्रज्वलन L110 चरण के बंद होने के तुरंत बाद किया गया है। यह चरण कुल 200 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। The advantage of having cryo stage as upper stage is the high specific impulse of the propellant combination. Cryo stage performance normal. Having high specific impulse roughly means a lesser quantity of fuel being able to impart higher delta V or the velocity addition to the ongoing stage. Plus 8 minutes. हर एक चरण के तंत्र विशेषज्ञ पूरी तरह रोमांचित रहते हैं जब उनका तंत्र पूर्ण निष्पादन कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं यान अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Shah, Trivandrum and Bengaluru ground stations tracking in the meantime. The tracking of the LVM3 OneWeb India-2 mission is carried out through a network of ground stations of ISRO Telemetry Tracking and Command Network, ISTRAC, along the flight path. The trajectory and separation events are ascertained through the ground stations. For this mission, Sriharikota, Bengaluru, Trivandrum, Antarctica, Savalbird and Lucknow ground stations are participating. Plus 9 minutes. To cater to the visibility between the Trivandrum and Antarctica ground station limits, a shipborne terminal is deployed to importantly view the cryo stage operational regime and the separation of first and Cryo second batch stage of performance satellites. normal. For this particular mission, for about 43 minutes after the injection of the fourth batch of satellites, the rocket goes out of the coverage of ground tracking stations. In the meantime, the data of the inertial navigation system is stored on board, and when the next ground station
blurred is starting to acquire the data. The confirmation of separation events and exact time and injection parameters of the separation events are telemetered. OneWeb समूह का यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ वाणिज्यिक समझौते के अंतर्गत यह दूसरा प्रमोशन मिशन है। इस समझौते के तहत 72 उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है, जिसमें से 36 उपग्रह LVM3 M2 OneWeb India-1 मिशन के साथ उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं और आज OneWeb India-2 मिशन में अगले 36 उपग्रहों को प्रमोचित किया जा रहा है। यह OneWeb कंपनी के लिए 18वां प्रमोशन है। इससे पहले कुल 588 उपग्रह अन्य प्रमोशन यान से पहले ही भेजे जा चुके हैं। इस मिशन की सफलता के पश्चात OneWeb कंपनी प्रथम निम्न भू कक्षा वाले उपग्रहों के नक्षत्र का निर्माण पूरा हो जाएगा और इसके साथ ही OneWeb उच्च गति कम विलंब वाली वैश्विक संचार सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा। इसमें विश्व स्तर पर समुदाय, उद्यम, सरकारों को जोड़ने का यह सर्वप्रथम प्रदर्शन कर पाएंगे। न सिर्फ उद्यम बल्कि छोटे कस्बे, गांव, म्यूनिसिपैलिटी तथा स्कूल जैसी सुविधाएं जो कि दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर हैं, उन्हें जोड़ा जा सकेगा। यह मिशन न सिर्फ OneWeb के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। As we were mentioning earlier, the present mission is the second mission of OneWeb with ISRO in collaboration with New Space India Limited. The previous mission with LVM3 M2 was the 14th mission for OneWeb and first with ISRO. The 36 satellites had then been placed in 601 km circular orbit, while for the present Plus mission 12 minutes. the intended orbit is 450 km circular. Correspondingly, the relative velocity requirement at the time of injection is higher compared to the previous mission. The present mission LVM3 M3 OneWeb India-2 is the 18th launch mission for OneWeb. वर्तमान में तृतीय Cryo stage performance normal. और अंतिम चरण प्रज्वलित है और सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम उड़ान से 760 सेकंड आगे आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 465 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Plus 13 minutes. OneWeb is a global communications network powered from space, enabling connectivity for governments, businesses, and communities. OneWeb Gen-1 satellite constellation comprises of 648 individual satellites which are placed in low Earth orbit. India's Bharti Enterprises serves as a major investor and shareholder in OneWeb. As we told, this is OneWeb's 18th launch, its third this year. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ और यह दर्शाता है कि इसरो किस गुणवत्ता से, किस विश्वसनीयता से 14 minutes. यह तंत्र का विकास कर इनका निर्माण किया जाता है और इनका निष्पादन पूरी तरह अपेक्षित। Cryo stage performance normal. तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। For the present mission, the total burn time of C-25 is 632 seconds.
plus 15 minutes. We are 15 minutes past the launch time. Cryogenic upper stage currently thrusting. तृतीय चरण C25 सामान्य निष्पादन करता हुआ आगे बढ़ रहा है। यह इंजन इतना जटिल है और भारत इसमें पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है। अभी अभी पुष्टि हुई, C25 इंजन को शट ऑफ कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। The C25 stage thrust has been cut off, and now we are awaiting the correct injection parameters for the separation of the first and second batch of Plus satellites. 16 minutes. प्रथम चरण के 4 उपग्रहों की कक्षीय स्थितियां कुछ इस प्रकार होंगी। इसकी ऊंचाई 455.5 किलोमीटर के करीब और सापेक्ष गति 7.63 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी। Today's launch will bring the total number of satellites in the constellation to 618. A major milestone will be achieved with the number of satellites now in orbit, enabling the global service. OneWeb will become the first LEO operator to Plus reach 17 this minutes. milestone of being ready to roll out its global coverage.